the heading in your notebook. This is the first question. What is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole? Batao. So we have a cube here of side 1 centimeter and that cube encloses an electric dipole. ये क्यूब है हमारे पास और इसकी साइड आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है और इसके अंदर एक डाइपोल एनक्लोज्ड है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये क्या होता है? Number of field lines passing through a point. Yes, it is the number of field lines crossing an area is electric flux. And the mathematical relation according to Gauss law, how do we write it? It is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed inside a surface. No? So what is the charge enclosed in this case? Because we have a closed surface here. So the charge enclosed is dipole has equal and opposite charges separated by certain distance, right? So what is the charge enclosed? Q plus minus Q, because one charge is positive and the second charge is negative. So charge enclosed is 0. So what is the electric flux? 0. Write the answer. See, regardless of the size of the cube, it does not depend. It does not depend upon the sides. You know, side, though side is given, side of the cube is given, but it doesn't matter. Even if the cube is of side centimeter or 5 centimeter, it will not affect the electric flux. The flux remains the same, 0. Only because the total charge is 0. दोबारा समझा दो, दोबारा समझा देते लेट आया था. हाँ, तो लेट नहीं आना है आपको. यू सपोज टू बी ऑन टाइम. देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका 1 upon epsilon naught times द चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है. तो अब बिकॉज इस क्यूब के अंदर एक डाइपोल है और डाइपोल पे वन चार्ज इज पॉजिटिव, अदर चार्ज इज नेगेटिव. तो जो टोटल चार्ज आपका एनक्लोज्ड है इसके अंदर वो प्लस क्यू माइनस क्यू है. ये आपका आ गया 0. ठीक है. नेट चार्ज 0 आ गया. तो अगर नेट चार्ज 0 है, चार्ज एनक्लोज 0 है, तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा? 0 हो जाएगा. अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि क्यूब की साइड कितनी है. क्यूब की साइड जितनी भी हो, बड़ा हो छोटा हो, डजेंट मैटर. अगर उसके अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है वो मैटर करता है. अगर क्यूब आपका 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का भी है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी 0 इन दैट केस ऑल्सो. ठीक है. हाँ जी, फरहान, क्लियर हो गया? हो गया. So in this question we have you can see we have a closed figure and there are 3 point charges, plus 2q, minus q and plus 3q. They are two charges are inside the surface, closed surface S. They are enclosed within the surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? How will we find the electric flux? Does this plus 3q charge contribute in the electric flux? No. No, it won't contribute. Why? Because we only consider the charge that is enclosed inside the surface, right? So again, write the same formula. Phi E is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. And here the charge enclosed is? The charge enclosed is this charge, right? So plus 2q and minus q. So the charge enclosed is q. We will not consider plus 3q because it is outside the closed surfaces. So phi E is the electric flux. We'll write 1 upon epsilon naught and charge enclosed is q. So it is q upon epsilon naught. This is the answer. Okay, next question. We have a charge q. It is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through each face of the cube? So first draw a cube.
and a charge q is placed at the center of the cube. Side of the cube is L. So we have to find the electric flux passing through each face of the cube. How will you do this? First, we'll find total electric flux. Total electric flux is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. And the charge enclosed here in this case is Q, no? So it is Q upon epsilon naught. This is the total electric flux. Now, in a cube, there are 6 faces, right? We have 6 faces in the cube. This, I think with this question we have discussed. This was in your NCERT as well. So electric flux through one face, we are going to find. Through one face, it would be 1/6 of the total electric flux. This we had discussed in the previous class, right? So 1 upon 6 into Q by epsilon naught. This is the answer. Through one phase, it is 1/6 of the total electric flux. A charge Q is placed at the center of the cube of side L. What is the electric flux passing through two opposite faces of the cube? Now we are taking two opposite faces of the cube. Like these two faces we can consider, these are the opposite faces, no? हाँ जी, opposite faces का कैसे करोगे? वन फेस का भी फाइंड किया था हमने. Electric flux through one phase is Q upon 6 epsilon naught. This we had done in the previous question. So electric flux through two opposite faces would be बताओ क्या करेंगे? वन फेस का अगर 1/6 है, Q by 6 epsilon naught है, तो opposite faces के लिए क्या करेंगे? We need to multiply it by 2, no? दो फेसेस का निकाल रहे हैं ना, वन फेस का इतना, टू फेसेस का कितना होगा? 2 multiply by Q upon 6 epsilon naught, and your answer is Q upon 3 epsilon naught. Please write this. Now we have this question. We have two charges of magnitude -2Q and +Q are located at points A0 and 4A0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3A with its center at the origin? Have you understood? How are you going to do this? So we have a sphere and its radius is 3A, its center is at the origin. So this is this coordinates of this point, the edge, the corner is 3A0. And we have two charges, -2Q and +Q. So -2Q is located at A0. So -2Q is located at A0. A0 is somewhere here now. Here we have -2Q, it is located at A0. And this +Q is located at 4A0. So 4A0 is this point lies somewhere here, and +Q charge is here outside the sphere at this point 4A0. What is the electric flux? Question क्या है? What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3A with its center at the origin? Electric flux sphere, जो sphere में charge enclosed है, we'll consider that charge only in this case, right? तो sphere में कौन सा charge enclosed है हमारा? Sphere में charge enclosed कौन सा है? This charge is enclosed. -2Q. -2Q.
So we are going to consider this charge only. Plus Q will not consider because it lies outside the sphere. Okay. So what is the answer? minus 2q by epsilon naught. Yes, minus 2Q by epsilon naught. We are not going to consider plus Q because plus Q lies outside the sphere. Right? Yes. So we have another question on the screen. The electric field in a region is given by this. With E naught, value of E naught is given. Find the flux of this field through a rectangular surface of area 0.2 I cap parallel to YZ plane. कैसे करेंगे? So first of all, write the things that are given to you. So electric field is given. We can write electric field as it is 3/5 E naught I cap plus 4/5 E naught J cap, right? The value of E naught is given to us. It is 2 into 10 raised to the power 3 Newton per coulomb. Find the flux of this field. We have to find the flux through a rectangular surface of area this. Area is given. It is 0.2 I cap and parallel to the YZ plane. This is parallel to YZ plane. तो एरिया वेक्टर देखो, अगर कोई एरिया YZ प्लेन के पैरेलल है तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर ये YZ प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, राइट? है ना? तो एरिया के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ y एंड z. तो यू आर गेटिंग दिस, यू राइटिंग दिस 0.I cap, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है. एंड हाउ डू वी फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Using the definition of electric flux, it is the dot product, it is a scalar quantity, right? And we write electric flux as vector E dot vector A. Take the scalar product of these two quantities. No? Now you can do it. कैसे करेंगे? phi E क्या आएगा आपका? First write for vector E because E naught is given, its value is 2000 Newton per coulomb, so we can put the value here. So it's 3/5 into 2000 I cap. We can write like this. 3/5 into 2000 is the value of E naught, right? I cap. 2 into 10 to the power 3, it is given to us. Plus 4/5, again we have 2000. J cap. Dot product लेंगे. Area is 0.2 I cap. And how do we write in dot product? I dot I is 1. पता है ये? And I dot J is 0. है ना? So we are going to multiply this and this only because when we multiply with J cap, we'll get nothing. So 3/5 into 2000 into 0.2. And the unit of electric flux, who is going to tell me? Newton meter square per coulomb. That's right. Very good. Newton meter square per coulomb. 5 ones are 5, 5 fours are 20. We get 400 here. So 4 threes are 12. And we have, we can write 10 here. We can cancel this 0. So आपका आ गया ये 4 threes are 12, 2s are 24 and 240. No? 240 Newton Yes, meter square per coulomb is the answer. इसको नहीं आया ये समझ? We are using the formula of electric flux here, another formula जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का. बाय डेफिनेशन दिस इज द फॉर्मूला. और वो जो अभी तक हम यूज कर रहे थे Q अपन एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है? गॉस लॉ से है, राइट? यस, हैव यू डन? Okay, let's read the question first. So given a uniform electric field, तो आपको electric field given है. This is the electric field.
So write E as vector form में given है, right? So 5 into 10 raised to the power 3 I cap means it is pointing towards x axis. So electric field is towards x direction. That's why we have this I cap here, and the unit of electric field intensity is Newton per coulomb. Find the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane. So let's draw the coordinate axis first so that we can understand it in a better way. So this is your x-axis, this is y-axis, and this is your z-axis. So how do we draw the square? Square is parallel to the YZ plane, no? So we are going to draw the plane like this. This is a square that we have. It is parallel to the YZ plane, and the side of the square is 10 centimeter. Now, what would be the flux through the same square? So first we have to find the electric flux like this. And what if the same square makes an angle of 30 degree with the x-axis? These two questions, this question has two parts in it. Let's write the first part as A and second part as B. So in the first part, we can find the area first. How do we find the area? Side square हो जाएगा आपका, square है ये, ठीक है? 10 centimeter is the side. So we can write 10 centimeter as 0.1 or 10 to the power minus 1 meter. So 10 to the power minus 1 square हो जाएगा 10 to the power minus 2 meter square is the area. अच्छा, अभी ये area निकाला. Because electric flux में हम क्या करते हैं? We take the dot product of the electric field intensity vector and the area vector. So what is the direction of this area vector? Area vector की direction क्या होगी बेटा? Perpendicular to the area होती है ना? इसको नहीं आता ये. तो अगर आपको एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखना है then you are supposed to write like this 10 to the power minus 2 I cap we can write because वो YZ प्लेन के पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया होगी. तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो x एक्सिस होगा, राइट? है ना? तो both E and A they are pointing in the same direction, so we can write EA cos theta. So cos theta, theta is 0 degree here because both E and A, you can see their vectors. These vectors are pointing in the same direction. Either you can do like this or you can take the dot product directly. I cap dot I cap करोगे you will get 1. Either you can do I cap dot I cap or you can do like this. It's your choice. ठीक है? कैसे आपको लिखना है? So you simply multiply this value 5 into 10 to the power minus 3 and the area is 10 to the power minus 2. Cos 0 degree is 1. ठीक है? So what will you get? 5 into 10 raised to the power minus 5. And the unit of electric flux is Newton. Newton, what is the unit? आद्या बेटा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? Newton coulomb square. फरहान बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट? यस मैम. क्या हो गया? अभी किया ना प्रीवियस क्वेश्चन? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दैट्स करेक्ट, राइट. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मैम 5 into 10 की पावर -5 क्यों है? 5 into 10 की पावर 3 है ना जब क्वेश्चन में? Oh, we have +3 here. यस मैम. So sorry. वो कॉस थीटा क्यों हुआ? देखो या तो आप cos थीटा से कर सकते हो, बताती हूँ अभी. तो ये आपका 50 आ गया, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है? cos थीटा क्यों हुआ? देखो दो तरीके हैं इसको करने के. एक तो ये है कि आप ये cos थीटा करो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप है उसमें, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. और जो एरिया वेक्टर है वो आपका देखो जो प्लेन है वो पैरेलल है वाईजी प्लेन के. तो आपका जो प्लेन है वो वाईजी प्लेन के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करोगे. और जो उसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो वो भी आपका उसी एक्स एक्सिस की तरफ ही पॉइंट कर रहा है.
क्योंकि जब YZ के परपेंडिकुलर कुछ भी लोगे तो वो X एक्सिस ही आएगी. So both are pointing in the same direction, and phi, the electric flux, is the dot product of these two vectors. So because दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो EA cos 0 डिग्री हो गया. वेक्टर A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा होता है. तो ये वेक्टर E डॉट A है तो ये EA cos थीटा हो गया. तो cos 0 डिग्री इज 1. या तो इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, या आपका जो भी एरिया आया 10 की पावर -2 आ गया तो आप एरिया वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, 10 की पावर -2 आई कैप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये सेम आई कैप की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, एक्स एक्सिस में ही पॉइंट कर रहा है. और फिर आप वेक्टर ई डॉट ए ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब आप लिखो 5 इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए और फिर आप लिखो 5 इंटू 10⁻³ आई कैप डॉट 10 की पावर -2 आई कैप. अब आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है तो ये आपका आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर. ऐसे भी कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट लेके, और cos 0 डिग्री भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस. ठीक है, मेन ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अभी जैसे मर्जी कर लो. अब सेकंड हाफ में क्या है इसके, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर. फ्लक्स क्या होगा थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है प्लेन, तो अभी इस टाइम प्लेन कैसा है हमारा, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ऐसे. I should use ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन, ऐसे आपका इस बार, और है स्क्वायर शेप में, है ना, ऐसे. ऐसे. तो ये एक्स एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो आपका फ्लक्स क्या होगा बताओ. हम्म, पाई क्या होता है, वेक्टर ई डॉट ए. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए दिस टाइम. ए का जो डायरेक्शन है वो आपका ये होता है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, नो. और ई आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो एंगल क्या आएगा. ऋषिका, यू हैव डन दिस क्वेश्चन. Ma'am, I've done this, but it's not right. फिर भी बताओ आपने कैसे किया है. मैंने तो वो FDS वाला फॉर्मूला लगाया या तो EDS वाला, तो उससे ई तो एस नहीं हुआ. कॉस 30 डिग्री लिया आपने. मैंने, हाँ मैम, तो होना क्या चाहिए. साइन में आना चाहिए. मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. देखो यहां से भी इसको ऐसे ले सकते हो, तो ये 90 है आपका, दिस इज योर एरिया वेक्टर दिस टाइम. तो ये 30 डिग्री और ये पूरा 90 है ना. सो द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए इज 92. see 90 is the angle that area vector makes with the plane. What is the angle between E and A? This is the question. 40. ये पूरा आपका 90 है and this part is 30. This is 60, sorry. No. 60 degree, right? So we're going to write 60 degree this time. So EA cos 60 degree. Now put the values. E is 5 into 10 is power 3. A is 10 is power -2 and cos 60 degree. What is the value of cos 60 degree? जो sin 30 की होती है half. तो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है 50 into 0.5 और half is 25. No, this is the answer. 25 Newton meter square per coulomb is the answer.